Start with the practice set 1.2. That is the first question asked, that the points and coordinate are given. That is A point, B, C, D, E, and the coordinates are given below. -3 A coordinate is -3, B coordinate is 5, and C coordinate is 2, and D coordinate is -7, E coordinate is 9. And they have given 3 questions, but I have picked up only one question. They are whether the given segments आर कॉन्ग्रुवेंट और नॉट. ये दो सेगमेंट दिया है, सेगमेंट डी एंड ए बी, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुवेंट है कि नहीं. we have just now discussed and revised also. When we can say that the given segments are congruent, when when this length and this lengths are equal. दोनों का लेंथ सेम आएगा तभी हम कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बोलेंगे. पहले हमें फाइंड आउट करना है सेगमेंट डी का लेंथ क्या है. फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू ऑल वेरी वेल नो हाउ टू सॉल्व दिस सम. वी हैव ऑलरेडी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करना है. पहला हम लिखेंगे दैट इज सेगमेंट डी इज नथिंग बट द लेंथ डी. हमें लेंथ डी करना है, बट वी नो अबाउट द डिस्टेंस ऑफ ई. We can write it like this. We want a coordinate of D. What is the coordinate of D? See how I have written. I repeat. DE लेंथ DE लिखो. हमें डिस्टेंस के फॉर्म में करते हैं क्योंकि हम डिस्टेंस का बहुत इजीली करते हैं. कोऑर्डिनेट ऑफ D. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D is what dear? We will write it. Coordinate of D is what? See? Yes. Equal to -7. Then we want a E na. You know how to solve DE. Yes. Coordinate of E is equal to, find out where is our E. E is 9. So we have written. Next is what step we usually do? We will check which number is bigger. Obviously positive is bigger than, so we say 9 is greater than -7. Then what is the formula to find out distance DE? That is larger coordinate minus smaller coordinate, right? So we are writing larger coordinate minus smaller coordinate. Then what is the larger coordinate? 9 minus of -7. That is 9 plus 7 is 16. So we got distance of DE is 16. But our sum has not yet completed because they asked to find out DE and AB. और दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि चेक करना है. तो अभी हमारा एक पार्ट हो गया है DE. So we similarly we will write for AB also. Segment AB. Okay, we will write segment AB equal to same length AB equals to distance of AB. So we will write it coordinate of what? A is what? What is the coordinate of A? -3. So I write it -3. Coordinate of B is 5. So I am writing 5 here. Now which is bigger? 5 is greater than the negative. So again the formula, what is the distance of AB? Distance of AB is larger coordinate minus smaller coordinate. Okay. So now what is my larger coordinate? 5 minus of -3. That is 5 plus 3. So how much I got? 8 here. So distance of AB I got 8. Now see what is the segment. We will write it. Now think it like it the segment form. Segment DE हमें 16 मिला. I'll write it like this. Segment DE we got as a 16. Okay. And then what is this one? Segment AB is what we got. Okay. Segment AB is what we got as a 8 here. Actually we should write length only. We can, just for understanding I have written here. So now tell me, can we say these two are congruent? No. Because their length is not equal. So therefore we say there, what you will say? Segment DE is not congruent. ये बोलते हैं congruent का symbol. जब same रहेगा इसको हम लिखते थे DE is congruent to segment AB. लेकिन अभी congruent नहीं है तो हम ऐसा strike करेंगे. आपको ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं. Segment DE is not congruent to segment AB. So understood, when we will say congruent? When their length is equal, then we say congruent, and the rest we will say it's not congruent. So you understood how to do this sum? Simply a distance formula here also. Question of the exercise 1.2. Point P is the midpoint
of segment CD. P is the midpoint of segment CD. Firstly, we will draw a midpoint. What is this segment CD? Please use a pencil to draw. CD. This is the segment. Segment का नाम CD है और इसमें midpoint क्या है? You remember dear, midpoint means it is placed in the center of that segment. Okay, we have placed it. Now they said CP is 2.5. That means इधर से इधर तक CP का है 2.5. And find the length CD. See, find the length CD. पहली बात है, जब मिड पॉइंट है तो CP इज इक्वल टू PD. CP जितना है उतना ही PD भी रहेगा. तो ये 2.5 है तो ये भी 2.5 हो जाएगा. अभी पूछा है CD, तो CD is what? 2.5 plus 2.5, that is 5. We can write it like this. So I'll tell you how you are going to write it. Now this is given in the question. P is the midpoint. We will write it again. P is the midpoint of segment CD. Written. After that, we want to find what? CD. CD find out करना है ना. So we will write length CD equal to CD जो है क्या है? 2 double time ना, 2 बार हो रहा है ना, 2 times. Is it or not? Do you want to write like this? Or we can write it in another way if you want. I'll show it in another method also. What is this? CP. अभी क्या है? CP is equal to PD or not? CP is equal to PD है कि नहीं? क्योंकि ये मिड पॉइंट के वजह से जितना CP रहेगा उतना PD रहेगा. तो CP भी दोनों भी मिलाकर कितना रहेगा? दोनों भी मतलब 2.5 रहेगा. हमें अभी CD फाइंड आउट करना है. तो CD equals to CP plus, you can write it length everywhere. Okay, length CP plus length PD. So that is CP is 2.5 and PD is also 2.5. 2.5. If you add it, you will get a 5 centimeter. If you want, I'll show you 2.5. 5, 10. Okay, 1, 2 plus 2, 5.0. Point के बाद 0 है, जो value नहीं है, इसके लिए सिर्फ 5 ले रहे हैं. So what is the answer here? The length CD is 5 centimeter. Are you able to understand? Here, if there is no centimeter or meter given, then you can write it units also here. Okay. Next question, fourth one. If AB is 5 centimeter, BP is 2 centimeter, AP is 3.4 centimeter. This is all are the segments, and they said compare the segments. You remember compare. Compare matlab hamesha you have to remember that which is bigger, which is smaller. Now you see, tell me 5 is bigger, 2 is bigger or 3.4 bigger? Definitely 5 is bigger, so we will write it 5 here. Written. Then which is bigger? Next which is bigger? 3.4. After 5, 3.4 is bigger, so we will write 3.4 like this. After 3.4 left is 2, so we will write it 2 like this. Written. So first bigger, second bigger, then the next one. Then what is the 5 name? You know that is AB. We will write it AB is greater. 3.4 is whose name? AP. जिसका नाम है उसके नाम लिखो. AP greater than 2 is what? BP here. So we finally say AB is bigger and BP is smaller, right? So we can write it along with the segment word. If you want, you can use a segment. Only I am including a segment here. Nothing I am doing it. Understood? This much only. The sixth question. Answer the questions with the help of the figure 1.14. Okay, we can see the number line here. Yes. In that number line, or how it is given, see my dear. That is we can see the points. Okay, R, U, Q, L, P and so on. So we have seen, and 6 minus 4. See, this is a number line, normal number line, 0. If you want, you can put a number to fill it up also. 1, 2, what would be then? This 3, 4, 5, 6. Okay, use a pencil to do, and this is 0. So definitely this is a -1, -2, -3, -4, -5, -6. We can fill it up and keep it for our reference if you want. Now let's see the first question. State the points. ओके, पॉइंट का नाम देना है. हमेशा याद रखना डियर, क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं. नेम द रेस, नेम द सेगमेंट. सो वी हैव टू, हियर इट इज आस्क्ड फॉर द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी. इक्वी डिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वी डिस्टेंस? मतलब इक्वी मतलब इक्वल डिस्टेंट. ओके, इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए. मतलब 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब इक्वल. बी से लेकर, अभी वेयर इज अवर बी पॉइंट? हियर
कैन वी सी द बी पॉइंट हियर? यस. यहाँ से लेकर आप जो भी नाम लेने वाले हो वो दोनों भी कैसे, वो दोनों नाम कैसे एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. जैसे कि अभी देखो मैं इफ आई एम नेमिंग इट बी ए का कितना डिस्टेंस है? 1 2, 2 डिस्टेंस है. तो वैसे ही दूसरी तरफ भी ले लो, बी ए 2 ही रहना चाहिए ताकि दोनों इक्वी डिस्टेंस है. 1 आई हैव टेकन बी ए, दैट इज पॉइंट ए. One more, what should I take it so that there will be 2 units difference? There I can take it as C or not? C, because B से लेकर क्या क्वेश्चन है? B से जो आप जा रहे हो पॉइंट ले रहे हो दोनों भी एक दूसरे से डिस्टेंस सेम लेना चाहिए. BC is also 2. C, check out from here 1 2. Here also 1 2. So we can take it the point which can state the points they said. Point A. बी का नाम लिखने की जरूरत नहीं. वी आर सेइंग द पॉइंट ए एंड पॉइंट सी आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी. विथ द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हमने लिया? 2 सेंटीमीटर. आई विल राइट एंड शो फॉर यू हाउ वी हैव सेड. नाउ टेल मी पॉइंट. यस, वी विल सी अगेन व्हाट स्टेट द पॉइंट्स. पॉइंट बी का लिखना जरूरी नहीं है. बी से लेकर ए, बी से लेकर सी. सो पॉइंट ए एंड सी, आई एम राइटिंग पॉइंट. Okay, point A and point C. See, we can take it from the question. Point A and C are equidistant from point B. How much is the distance? With the distance, कितना distance था? With the distance 2 centimeter. 2, not centimeter, we will use our 2 units. Clear? Everyone understood? If you want you can take one more example. ऐसे नहीं कि 2 ही होना चाहिए. आप 3 ले रहे तो एक तरफ दूसरी तरफ भी 3 होना चाहिए. चेक करो वापस. अभी देखो हम क्या करेंगे, B से लेकर P तक जा रहे हैं. सोचो इफ B से लेकर P कितना जा रही हूँ मैं? 1 2 3 4. इज इट और नॉट? 4 पॉइंट. तो फिर से यहाँ 4 पॉइंट क्या आ रहा है देखो, 1 2 3 4. तो यानी कि डी और पी. इस तरफ क्या लिखेंगे, वापस कैसे लिखेंगे? वैसे ही पॉइंट पी एंड पॉइंट डी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी करके बी से लेकर करना. आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू. सो यू विल टेक इट. बी का पूछा तो बी का लेफ्ट और बी का राइट जो है, लेकिन दोनों डिस्टेंस 4 यूनिट का डिस्टेंस इधर है तो 4 यूनिट डिस्टेंस इधर भी होना चाहिए. वैसे यहाँ पे भी वापस एक और पूछा है, write a pair of points equidistant from point Q. What is that again? See, now they are asking for a Q. If I am taking one step, Q के point क्या है? L ले रहे हैं तो एक का, तो इधर दूसरा क्या आएगा? U. So you can write L and U. If you are going 2 distance, Q से 1 2, that means P. यहाँ से भी 2, that means R and P we say. So it's up to you. You can take 2 points or more than 2 here. Okay, you try it. If you have a doubt, you can ask me. Now find the distance UV. What is second sum we have done? Distance UV. You know to find out distance. आप पहला U का coordinate निकालोगे. Where is our U? U coordinate is -5 and V coordinate is 5, right? So then you will write which is the formula. What is the formula? Larger coordinate minus smaller coordinate. Same sum. So same sum here you are going to do the larger coordinate minus smaller coordinate. Then you can complete this one.